class. البياسك البنات والسير وطمن بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. कल के क्लास में हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने थे वो पढ़ा था. इंशाल्लाह आज के क्लास में हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस हम लोग वो सीखेंगे. कल का टॉपिक आई होप सभी को क्लियर है. एवरीबडी सेंट इन द होमवर्क, whoever sent, अल्हम्दुलिल्लाह से सबको समझ आ ही गया होगा टॉपिक. एंड जिसके थोड़े बहुत करेक्शंस थे मैं उनको कल बोल रही थी कि क्या क्या करेक्शंस हैं. तो आज के क्लास में विल स्टार्ट हाउ टू बिल्ड क्वेश्चंस. सो स्टेप 1 इज स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड. तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? वी यूजुअली हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ इज यूजुअली ओनली आस्क्ड इन क्वेश्चंस. अगर किसी को हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं होते हैं, ओनली देन वी यूज द वर्ड्स एज who, what, when, where, why and how. So this is completely optional. अगर आप ऐसे पूछना चाहें तो you can. Sorry. So if you want to ask question, you can ask using who, what, when, where, why and how. Who ask, who as in when you ask about a person. What as in about a thing or an action. When about time. Where about a place. Why about a reason. How about a method or a manner. सो हम लोग हु कब यूज करते हैं? इट इज वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन. एक इंसान को लेकर अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं देन वी यूज द वर्ड हु. देन इफ योर व्हाट यूज होता है कब? इफ इट इज अबाउट अ थिंग और एन एक्शन. जैसे कि कोई कुछ कर रहा है तो वो एक्शन हुआ, वो हम लोग व्हाट यूज करते हैं. व्हेन कब? टाइम को हम लोग पूछना है, लाइक एनीथिंग रिलेटेड टू टाइम वी यूज व्हेन. कहाँ? लाइक अ सर्टन प्लेस. प्लेस के बारे में है तो वी यूज वेयर. व्हाई? अगर रीजन, अगर आपको कुछ रीजन जानना है किसी से कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, वी यूज व्हाई. हाउ? मेथड, क्या उसका मेथड है या मैनर है, किस वे में हुआ, then we use how. Example, who is that? वो कौन है? Next example, what are you doing? आप क्या कर रहे हो? So who is that is a person. We are asking वो कौन है? Then we use who. What are you doing is आप क्या कर रहे हैं? Then we are asking them about their action. That is we use what. When is the meeting? We are asking them about the time. Then where is the park? We are asking them about a place. So we use where. Why are you sad? We are asking them the reason. Okay, आप sad क्यों हैं? How does it work? ये कैसे चलता है या काम करता है? We are asking them कैसे. So how does it work? Next step is use an auxiliary verb if needed. An auxiliary verb helps form the question. Common auxiliary verb include do, does, did, can और will. So auxiliary verb क्या है? आपको क्वेश्चन बिल्ड करने में मदद करता है. Common auxiliary verbs are do, does, did, can and will. Example, do you like pizza? आपको पिज्जा पसंद है? Does she play the piano? क्या वो पियानो प्ले करते हैं? Did they go to the party? क्या वो लोग पार्टी को गए हैं? Can you help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Will it rain tomorrow?
क्या शायद, या क्या आपको पता है कल बारिश होगी? सो यू आर आस्किंग क्वेश्चंस. So here do, does, did, can and will are a form of auxiliary verbs which help you form sentence. So यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट में who, what, when, where, why, how. These is commonly how we ask questions. अगर आपको ये नहीं यूज करना है, instead of how, wh or ho words, you can also use auxiliary verbs as do, does, did, can and will. Next is add subject who or what the question is about. आपको एक सब्जेक्ट ऐड करना है, जैसे हम लोग सिंपल सेंटेंसेस में देखे थे. सब्जेक्ट प्लस एक्शन इज सिंपल सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस डिटेल्स is another form of sentence. Subject plus verb or an action plus that thing. So in questions also we have to add a subject. The subject is the person or a thing you are asking about. First example, who is your friend? आपका कौन है, आपका दोस्त कौन है? What are you eating? आप क्या खा रहे हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल में सब्जेक्ट इज फ्रेंड. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट इज आप क्या खा रहे हैं, लाइक ईटिंग. व्हेन विल दे अराइव? यहाँ पर सब्जेक्ट इज वो कब लोग आ रहे हैं, व्हेन विल दे अराइव. नेक्स्ट इज वेयर इज द स्टोर? ये स्टोर कहाँ है? सो इन एवरी एग्जाम्पल दे आर टेकिंग समथिंग एज अ सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट को लेकर वो लोग सवाल पूछ रहे हैं. सो दैट इज नथिंग बट adding the subject to your question. Then complete the question with the main verb or information. Same simple sentences में कैसे वैसे ही we also build our simple questions. The main verb or information gives the action or details of the question. Who is your friend? What are you eating for lunch? We are adding more information. What are you eating is the common question. What are you eating for lunch is specific question. आप उनके lunch के बारे में उतना ही पूछ रहे हैं. If you ask what are you eating, you can generally ask them आप क्या खा रहे हैं. Like it might be a breakfast, snack, dinner. So that is a general question. If you ask specifically what are you eating for lunch, then that becomes only the question for lunch. When will they arrive at the airport? So they are specifically asking at the airport. That is adding more information or main verb. Where is the store located? Why are you laughing so hard? How did he make the cake? So these are the few examples where they have added the main verb or more information. Okay. Next is putting it all together. There are few examples of question also, like yes and yes or no question. Start with an auxiliary verb, that is do, does, did, can and will. Add the subject you, she, they, and add the main verb information like pizza, play the piano, go to the party, and so on. Examples: do you like pizza? यहाँ पर फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब या इंफॉर्मेशन आया. सो डू यू लाइक द पिज्जा? डज शी प्ले द पियानो? डिड दे गो टू द पार्टी? कैन यू हेल्प मी? विल इट रेन टुमारो? So this is yes and no question. See, do you like the pizza? Yes, I like the pizza. Does she play the piano? Yes, she does play the piano. Did they go to the party? Yes, they did go to the party, or they did not go to the party. Then, can you help me? That is, yes, I can help you. Will it rain tomorrow? Yes, it will rain, or no, it will not rain tomorrow. So, ये सभी examples yes and no वाले थे. So WH questions, that is
Starting words are WH. Questions is nothing but starting letters W and H है. Start with the question word. Question word हम लोगों ने पहले सीखा था who, what, when, where, why and how. Add the auxiliary verb if needed. अगर चाहिए तो ऐड करना है वरना नहीं. Do, does, did, can and will. Add the subject, your friend, you, they, the store, or the pen, the airport. So, depending on your question, you have to add your subject. Add the main verb and information. Is your friend, are you eating, will they arrive, or is the store located? Example, who is your friend? What are you eating? When will they arrive? Where is the store? Why are you laughing? So here we all the questions are started with WH. WHO who, WHAT what, WHEN when, WHERE where, and WHY why. So all these WH questions, we can't answer them in a yes and no situation. You have to say, my friend is. So this is not yes or no questions. You have to give the answer in sentences. This is about WH questions. Yes, whom also. So practice example. What is your name? Question word is what? Subject is your name. Main information is. Where do you live? Question word is where. Auxiliary verb is do. Subject is you and main information is live. Why are you happy? Question word is why. Subject is you. Main information is are happy. Then how does it work? Question word is how. Auxiliary verb is does. Subject is it. Main information is work. Can you swim? Auxiliary verb is can. Subject is you. Main information is swim. So in simple sentences मेन क्या है आपको क्वेश्चन वर्ड्स रहेंगे या auxiliary verbs. These are two. You can ask the questions using either question words. Question words are nothing but WH words, like words consist of WH which support the question, like does, do, can. Those are supporting words. आप इधर सिर्फ क्वेश्चन वर्ड्स को लेकर क्वेश्चंस बना सकते हैं आपके, या you can frame the question with using auxiliary verbs. Then there comes yes and no questions. Usually yes and no questions start with auxiliary verbs. If you have to sentence form में answer करना है, then we have WH questions. Okay, any doubts? Who means कौन? कौन sister? Yes, Ayat. मैम एक्सिलरी वर्ड्स क्या होते हैं? हाँ, एक्सिलरी वर्ड्स क्या होते हैं? जी. Auxiliary verbs are nothing but words which support your question. See here, an auxiliary verbs helps to form the question or support your question. Like is do, does, did, can, and will.
Do you like pizza? Do is only used, you're asking a specific person. आपको ये पिज्जा पसंद है तब do यूज होता है. Does in the sense क्या वो, if you are asking anybody something about, किसी चीज को लेकर आप पूछ रहे हैं, तो does she plays the piano. Then did in the sense क्या आप गए थे उधर, and can you help me, obviously you know can you help me is asking someone a favor. Then will it rain tomorrow, possibilities हैं या नहीं है, so you're asking them the question. Okay, understood. With an auxiliary verb, auxiliary verb is nothing but a verb that helps you form the question. Piano means जो, wait, I'll show. Can you see the screen? Here, this is called a piano. Okay. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैम जी स्टार्टिंग जरा असल थोड़ा लाइट बोलते मैम लेट ज्वाइन है पावर कट था यहाँ पर हाँ जी, मैं फिर और एक बार से एक्सप्लेन कर दूंगी. जज़ाकल्लाह जी. So today we learned about framing the questions. So first is question words. Question words are nothing but who, what, when, where, why and how. These WH के जो भी words रहते हैं ना, usually we ask them in questions only. Even how, it is asked to know the manner of something or a method of something. So who, what, when, where, why, how is nothing but question words. ये इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस को फ्रेम करना है आप लोगों को. हु कब यूज होता है, व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट अ पर्सन. व्हाट कब यूज होता है, व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट अ थिंग और एन एक्शन. व्हेन कब यूज होता है, व्हेन यू आस्क अबाउट द टाइम. Where about the place, why about the reason, and how about the method. यहाँ पर examples देखें. Who is that, what are they doing, when is the meeting, where is where is the park, why are you sad, and how does it help. जी, WH questions में, WH questions are direct questions and auxiliary questions are also direct questions, but they don't consist of WH words. यहाँ पर देखें WH question words जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करके आप क्वेश्चन बना रहे हैं. That is also a question. Auxiliary verb is nothing but without these you're framing the question. So that is auxiliary verb. Then use of auxiliary verb if needed. And auxiliary verb is nothing but helps to form the question. Do, does, did, can, and will. Do you like the pizza? Does she play the piano? Did they go to the party? Can you help me? Will it rain tomorrow? So all these are auxiliary verbs. यहाँ पर हर एक कोई भी sentence ले ले आप example में, we have not used the WH questions or question words. We haven't used them here. So without them, when you frame the question, that is auxiliary verb. Then you have to add the subject. आपका क्या subject है, जो subject को लेकर आप question पूछ रहे हैं, you have to mention the subject. उसे subject का थोड़ा और information add करें तो you will have a proper specific question. So how you build simple sentences? Same way, simple questions भी form होते हैं when you add an auxiliary verb. If you need, you can add. If you don't need, you don't need to add. We have to add a subject and give a more information
on it. Then here comes yes and no question and full form questions. Yes and no questions में usually auxiliary verb ही use होता है, जैसे कि does, do, does, did, can and will. Subject add करके उसका main verb add करके you frame the questions. Like example, do you like the pizza? Does she play the piano? Did they go to the party? Can you help me? Will it rain tomorrow? And next are WH questions. सेम क्वेश्चन वर्ड्स को ऐड करके उसके आगे द ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपको उस क्वेश्चन का में चाहिए तो, वरना नहीं, देन उसका सब्जेक्ट, फिर उसका मेन वर्ब या इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल, हु इज योर फ्रेंड, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हेन विल दे अराइव, वेयर इज द स्टोर, व्हाई आर यू लाफिंग. So these are the practice example. What is your name? Question word is what? Subject is your name. Main information is is. Is in the sense आपके बारे में पूछ रहे हैं. What is her name? Her will be the main information here. Where do you live? Where do you live is question word is where. Auxiliary verb is do. Subject is you. Main information is live. यहाँ पर देखें, someone asked me here what आयत रमीज your question WH questions में और auxiliary words में क्या difference है. यहाँ पर देखिए, we are using forming this sentence where do you live using WH word and also an auxiliary verb. So where you live is also a proper sentence and where do you live is also a proper sentence. So auxiliary verbs is nothing but वो आपकी मदद करता है आपका क्वेश्चन बहुत एक स्पेसिफिक वे में किसी के सामने रखने के लिए. सो डू यू लिव is nothing but क्या आप जिंदा हैं. If we delete where from here, do you live is are you alive. They are asking you are you alive. So depending on what question it is, you can either cancel WH word or either cancel the auxiliary verbs. आज का होमवर्क यही है. यू हैव टू फ्रेम योर क्वेश्चंस एंड राइट द क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट एंड मेन इंफॉर्मेशन. जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, वैसे आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं. 5 सेंटेंसेस बना के यू हैव टू मेंशन क्वेश्चन वर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है एंड मेन इंफॉर्मेशन क्या है. Example, I'll give you all the example also. What is today's homework? Okay. What is my question word? आप सभी कैप्चर ये कमेंट बॉक्स में लिखें. My question word is. What is my question word? I want you all to answer in chat box. Yes, right. What? Then, what is my subject? My subject is, yes, today's. No, my subject is homework. Main information will be today's. I'm specifically saying today's, then that is the main information. Understood? Subject is homework and main information would be today. Okay, clear? Yes, is a verb. You can also add is here. Is the main information. आज का ही लेके आप कर रहे हैं तो is today you can add is as main information. Understood?
ये सुमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैम सलाम। ये मेन इंफॉर्मेशन में इज और लीव आया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी जी जी, मेन इंफॉर्मेशन में इज भी है और लीव भी है, तो ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। इज भी है एंड लिव भी है। इज, जी, मेन जी। इंफॉर्मेशन। बट व्हाट सब्जेक्ट योर नेम, मेन इंफॉर्मेशन इज, हाँ, तो इज। बिकॉज अगर यहाँ पर देंगे टुडे नहीं होता इधर। इमेजिन आई डोंट हैव टुडे। व्हाट इज होमवर्क। ठीक है, व्हाट इज होमवर्क को आप इज कहाँ डालते हैं? मेन इंफॉर्मेशन में ही डालते हैं ना। बट आई हैव मेंशन इज टुडेज होमवर्क। आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग आज का होमवर्क क्या है। सो दैट बिकम्स इज टुडे। यू फ्रेम इट एज अ क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन देखें आप, इधर देखें। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, यू कैन सी माई कर्सर। व्हाट इज टुडेज होमवर्क। ठीक है। व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट इज द होमवर्क, तो मेन इंफॉर्मेशन में रिमेनिंग पार्ट ही जाएगा ना क्वेश्चन का। सो दैट बिकम्स इज टुडे। ओके मैम। ओके, इफ आई जज़ाक। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन में टुडे नहीं था, अगर आज हम्म, मैं मेंशन नहीं करती टुडे, तो मेन इंफॉर्मेशन में क्या आता? आज का। यू वुड अंडरस्टैंड, आज ही के बारे में पूछ रहे हैं तो ये इज यहाँ पर जाता। हम्म, ओके। ओके मैम, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अमीन भैया की। जी आप। सलामकुम मैम। वालेकुम मैम, अस्सलाम। लास्ट वीक से होमवर्क्स मेरे इनकम्प्लीट है। अगर किसी के जी। नोट्स अगर मिल जाते तो बेहतर रहता था, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए लास्ट वीक से होमवर्क्स नहीं डाली मैंने। नोट्स तो सिस्टर आपको खुद से बनाना होगा। मैंने पीडीएफ्स भेजे हैं एंड यू कैन चेक द यूट्यूब एंड डू योर होमवर्क ऑन योर ओन। आई डोंट, किसी और के नोट्स देखकर आप कॉपी करना आई डोंट प्रेफर। तो आप ओके एक मैम। बार जब आप आपको फ्री टाइम मिले, यू गो थ्रू ऑल द यूट्यूब के वीडियोस एंड डू योर होमवर्क बाय योरसेल्फ। ओके। व्हेन यू फिनिश ओके मैम। डूइंग, आज का आज ही करें, जो पेंडिंग है उसे छोड़ के आज का जो जी। होमवर्क है वो करें। इंशाल्लाह से आहिस्ता यू कैन कंप्लीट द रेस्ट। ओके मैम। ग्रुप में और भेजना है। आज और कल का होमवर्क क्या है मैम? कल भी क्लास ज्वाइन नहीं करी थी मैं, एग्जाम था तो मैम कल भी पूछी। सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़े थे हम लोग एंड वही जी। सेंटेंसेस को बना सेम। वहां पर भी सब्जेक्ट मेरी इंफॉर्मेशन वही कुछ डालना था। तो आज का होमवर्क 5 सेंटेंस है। कल का होमवर्क आप यूट्यूब लिंक चेक कर लें, मैंने ग्रुप में भी डाला है होमवर्क ग्रुप में, सो यू कैन चेक ओके दैट। मैम। ओके मैम। ओके। जज़ाकल्लाह खैर। अमीन भैया की। नहीं, एक ही ग्रुप है, होमवर्क ग्रुप इंग्लिश बेसिक ग्रुप करके है। एक ही ग्रुप है और कोई ग्रुप नहीं है। Yes. हमारा मैम अगर हैं आप इधर तो प्लीज पुट अ लिंक ऑफ द होमवर्क ग्रुप। ओके, शी इज नॉट देयर। कौसर प्लीज पर्सनली मुझे टेक्स्ट करें, आई विल शेयर यू द होमवर्क ग्रुप। यस सिस्टर, आई एम एंडिंग द क्लास, देयर इज नो नीड ऑफ लिविंग। मैं ही क्लास एंड कर दूंगी। जी ही ना। ही ना, अनम्यूट करें खुद को। आई गिव यू द ऑप्शन। मैम, यस। प्रैक्टिस एग्जाम्पल जो है इधर, व्हाट इज योर नेम और वेयर डू यू लाइव, उसकी जगह और हमारा इंफॉर्मेशन डाल के उसे बना सकते हैं हम वर्ड्स। यू मेक योर ओन सेंटेंसेस। ये जो प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स हैं उनको हम्म। छोड़कर यू मेक योर ओन सेंटेंसेस, तो आपको समझ आ कल जाएगा कि कल करे थे वैसा सेम है ना ये? हाँ, ये खाली क्वेश्चंस थे, वो सेंटेंस बनाने के थे, ये क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस बना।
ऊपर ऐसा व्हाट इज योर नेम है ना, वैसा है। अब क्या हम हाँ लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना है। जी जी जी। थैंक यू। ओके ओके। एंड ये पूछना था मुझे, आई आस्क्ड इन द ग्रुप अबाउट द स्पीच और लेक्चर थिंग. What is the topic you want me to lecture or give a speech on? I guess giving a speech on Ramzan is very good, but what specifically? It's about the Salah or the Dhikr or how you want to spend your Ramzan 30 days का schedule. What is it? आप मुझे चैट बॉक्स में बोल दें. हाँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई डोंट वांट एनीथिंग. आई एम आस्किंग फॉर योर सजेशन. So group is now open. You all can suggest me in the group. I'll see and reply there. तो आप मुझे वहां पर बोले कि क्या है. I guess upcoming month is Ramadan only, so we'll talk something on that. We'll see क्या है करके. ठीक है. मैं आपको ऑप्शंस भी दे दूंगी चाहिए तो. You all can say yes and no. मैं फिलहाल क्लास मस्कत से ले रही हूँ. आई एम नॉट इन इंडिया राइट नाउ. आई एम इन मस्कत, सो मस्कत से मैं क्लास ले रही हूँ आपकी. ओके श्योर. विल डिस्कस दिस फर्दर इन द होमवर्क ग्रुप. ओके आपके सजेशंस प्लीज, आप होमवर्क ग्रुप ओपन ही है तो उधर डाल दें. विल टॉक दिस फर्दर देयर. ओके ओके लेट्स एंड द क्लास. अस्सलाम वालेकुम.